Welcome to this video. In this video, we are going to study limits of complex function. As we know, in the real scenario, if we have a function defined from a set A to B, and suppose some x naught is a limit point, limit point of A, then we can talk about this scenario or this concept where x is tending to x naught, f of x is equal to L. ओके इसके लिए हमने दो तरीके से मेन कंसेप्ट में बातें की थी। पहला ये था कि whenever we are writing limit x tends to x naught f x equal to L, then we have first is the epsilon delta definition for limit. Okay, epsilon delta definition, and that was for every epsilon positive there exists some delta positive such that f the modulus value of fx minus L, that means the distance between fx and L is less than epsilon whenever distance between the point x and the x naught is always less than that delta and greater than 0. This greater than 0 means that this x now these x cannot be equal to x naught. That means we are talking about deleted neighborhood of x naught. ओके अब इस बात का कहने का क्या सेंस था कि जब कभी भी हमारे पास कोई एक इप्सिलॉन है देन वी कैन मेक एफ एक्स arbitrarily close to this L if we choose these x इनफ क्लोज टू दिस एक्स नॉट। ओके एक स्पेसिफिक रेंज होगी जहां तक, जैसे कि हमने ये देखा था, सपोज दैट वाज द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। सिंस इस वाई एक्सिस पे हम फंक्शन की वैल्यू को डिनोट करते हैं, ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव द पॉइंट्स ऑफ डोमेन। नाउ सपोज वी हैव अ फंक्शन, ओके इस तरीके का हमारे पास कोई फंक्शन है एंड सपोज दिस वैल्यू इज L. Okay, then for every given epsilon we have, suppose this is the epsilon, this denote the epsilon. So what we are doing here, that we are identifying some interval on the x-axis. So we can say, if we apply this method, suppose this point is x naught, then we have this interval. Okay, तो कहने का क्या सेंस हुआ कि x नॉट के इस कंटेंट करने वाले इस इंटरवल से जब कभी भी हम पॉइंट को लेंगे तो उस केस में हमेशा y एक्सिस पर L के इसी नेबरहुड में से फंक्शन की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द लिमिट। ओके, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी लिमिट। सपोज यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इस जगह फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ओके, देन इन दैट केस वी विल से जब भी हम एक्स नॉट के इस डेल्टा नेबरहुड से, ये डेल्टा नेबरहुड हो गया, इससे जब पॉइंट लेंगे तो उस केस में उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा एल के इस इप्सिलॉन नेबरहुड में ही रहेगी। दिस इज दी व्हाट डू वी मीन बाय इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट इन रियल एनालिसिस। ओके, that was the first concept in real analysis, and the second one, that is first discussion. Okay, and second is about the approaches. ठीक है, as you aware that in the real analysis we have this scenario. Okay, functions values are on fx on this y-axis, and on the x-axis we have the point of domain. Okay, now in the real line, if suppose if we are having a point x naught, if we are coming from the right hand side of z x naught, then in that case we will say we are coming from the positive direction. Okay, and when we are approaching x naught from the positive direction, then whatever the value of the limit is known as the right hand limit.
And when we approach to this x naught from the left hand side, from this side, then we will say we are approaching to this from the negative direction. And in that case L की जो भी वैल्यू होगी that is known as L H L. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास यू कैन सी एक्स नॉट पर अप्रोच करने के लिए वी हैव ओनली टू वे. आइदर वी कैन अप्रोच एक्स नॉट from the right hand side, or we can approach this x naught from the left hand side. In both the cases we have two limits, RHL and LHL. And when we say that L is going to be limit, okay, so if RHL is equal to left hand limit LHL, only in that case we say that the limit is exist. Okay, the limit is exist only in that case. तो इसका मतलब अगर हमें एक्स नॉट पर फंक्शन की लिमिट को डिटरमाइन करना है, or if we are able to determine LHL and RHL, and the value of LHL and RHL is equal, both the values are equal, then we will say that the limit of function at x naught exists. Okay, but if we come in the complex scenario, then this method is going to be, very important when we want to show that limit at a specific point is doesn't exist. Okay, so let us start with the definition of epsilon delta definition of limit of a complex function. देन वी विल टॉक अबाउट दी अप्रोचेस, और फिर हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में अप्रोचेस हमारे कहाँ पर एप्लीकेबल है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. एप्सिलॉन डेल्टा definition of limit of a complex function. So let us start this definition. Suppose that a complex function f is defined in a deleted neighborhood to z naught, and suppose that we have the value of the limit. Suppose that w naught is a complex number. Okay, the limit of f is z tends to z naught exists and is equal to w naught. And how we write this? That limit z tends to z naught, f of z is going to be w naught. Okay, and we write this. Okay, if for every given epsilon positive, there exists some delta positive such that
such that we have the scenario, okay, the similar statement such that f of z minus w naught is less than epsilon whenever uh, modulus of z minus z naught is less than delta, and since we are talking about deleted neighborhood, so we are having this scenario. Okay, so this is what do we mean by epsilon delta definition of लिमिट ऑफ अ फंक्शन, क्योंकि आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा है, तो दैट्स व्हाई वी आर कमिंग डायरेक्टली टू द डेफिनेशन of this existence of limit. Now what do you mean by these modulus? You know, whenever we identify modulus of a complex number, then that is a real quantity, and we are taking epsilon and delta as a real quantity, so this orderedness is appropriate. Okay, और इस चीज का सेंस क्या है कि हम हमारे लिए लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, डब्ल्यू नोट को हम लिमिट कब बोलेंगे, व्हेन दिस एफ जेड can be made arbitrarily close to this w naught whenever we have this z enough close to z naught. Okay, अब सिंस ये जो स्ट्रक्चर्स है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये एक डिनोट करता है उस रेंज को, या कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये स्ट्रक्चर, ये कंसेप्ट एक सर्कल को डिनोट करता है। तो जैसे हम रियल एनालिसिस में इंटरवल्स को डिस्कस कर रहे थे, यहां पर हम उन सर्कल और डिस्क को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट? ओके, सो एफ जेड is a limit w naught is z approaches. Now I'm using the word approaches z naught, or that we can write a limit z tends to z naught, f of z is going to be w naught. It means that the point, which point? F of z, w equals to f of z can be made arbitrary close to w naught if we choose the point z enough close to, okay, close enough to z naught, okay, but distinct from it. Okay, so this, what do you mean by writing f of z minus w naught is less than epsilon? Okay, now since we have this structure as open disk, एंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एक ही कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स फंक्शन को विजुलाइज करना इज नॉट पॉसिबल इन 3D, so we choose two complex plane at a time. So how we are writing this? See, suppose we have this plane containing the values of the points z, and this plane, both are the same complex plane, and this plane containing the values of its image under the mapping f. So what do you mean by writing mod of fz minus w naught is less than epsilon? That suppose we have, this is the w naught, okay, this is the w naught. So what we are saying that whenever some w, this is the disk, open disk having the radius epsilon. Okay, so on the right hand side we are saying कि अगर हम चाहते हैं
कि this any w suppose this point is, now this point is w, ओके। तो जब भी हम ये चाहते हैं कि ये W इस W नोट के इप्सिलॉन डिस्क में ही रहे या इप्सिलॉन नेबरहुड में ही रहे, तो इसके लिए वी मस्ट हैव सम, यू कैन सी an open disk in the z plane. So suppose this point represent z naught, then we have some delta here for which we can identify a disk delta, and we need to choose a point from this point. Okay, तो जब कभी भी z की वैल्यू इस z नोट के इस डेल्टा डिस्क में से आएगी, उस समय फंक्शन की वैल्यू हमेशा अगर इस w नोट के इप्सिलॉन नेबरहुड में ही जा रही है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. ऑन दैट सेंस वी से द लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट. These are represent, this is v and this is u, origin, image of origin under the function f. Okay, so this is how we can identify the neighborhood, or you can say this mathematical phenomena, this one. Okay, ये जो हमने लिखा है वो ये है. Okay, so you can use more at that. Whenever this z naught is coming in the delta neighborhood, this z is coming in the delta neighborhood of z naught, on that time the value of the function at z, that is w, is coming in the epsilon neighborhood of w naught. If this is true for every epsilon, that means for every epsilon we are able to identify such delta, then we say